हेलो, कितने लोग हैं? ऐसा है कि जो समापन सत्र होना है वो टाइम से थोड़ा पहले होगा, क्योंकि हमारे जो गवर्नर साहब हैं यहाँ के वो जल्दी आ रहे हैं। इसलिए मेरा जो भी आगे आने वाले वक्ता हैं वो कृपया समय का ध्यान रखें। कम समय में अपनी पूरी बात कैसे रख सकते हैं वो थोड़ा आप विशेष आपसे आग्रह रहेगा, और मंच से बार बार चिट्ठी भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि 5 मिनट में अपनी बात जो भी कहनी है और कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो अगले जो वक्ता है कौन आ रहा है? डॉक्टर एन रविशंकर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है मोदीपुरम से। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ये अपनी बात रखेंगे। और एक मेरा विशेष निवेदन है कि कोई भी बाहर नहीं रहे। यहाँ जब अपन आए हैं तो फिर कुछ यहाँ से सीख के जाए, अपना कुछ बातें लेके जाए। अगर घूमना है तो फिर आप एक दिन और रुक जाएं, कोई मना नहीं है किसी के लिए। लेकिन बाहर जितने भी कोई एक जिम्मेवार व्यक्ति जाए, बाहर जो भी खड़े हैं उनको अंदर बुला लें। कोई भी व्यक्ति, एक जिम्मेवार व्यक्ति जाए और बाहर से जो भी है वो उनको अंदर बुला ले। कोई भी उठ के जा रहा है, आ रहा है, ये व्यवस्था नहीं है। अपन सभी जिम्मेवार आदमी हैं। अपन जब अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर कोई कार्यक्रम करते हैं और उस समय कोई किसान उठकर रवाना होता है तो आपके दिल पर क्या गुजरती है ये बताओ। खुद के गिरेबान में देखो कि जब आपका बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलता है और उस समय 4-5 उठकर रवाना होते हैं, फिर आपके मन में यहाँ सलवटें आती है, कह नहीं पाते उनको। तो ऐसे ही मंच पर जो अब बैठे हैं ना, उनके सलवटें आ रही है जब आप उठ के निकलते हो और आते और जाते हो। तो इसलिए थोड़ा अपन सब जिम्मेवार लोग हैं, इसलिए थोड़ा निवेदन है कि आप बैठे और यहाँ से कुछ सीख के जाएं। और बाहर जितने भी हैं उनको मैं, वीसी साहब किसी को बाहर भेजो, तुरंत अंदर आ जाए। जो भी बाहर खड़ा, कोई अब बाहर नहीं रहेगा। चलो आप शुरू कर सकते हैं अपना विषय। नहीं, यूनिवर्सिटी की कौन क्यों सुनेंगे, बाहर से आए वो मुझे लगता है। हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईसीआर से, सीनियर ऑफिशियल से, कि आपके फेस से लोग, आपको फेस देख के लोग बाहर से आएंगे। तो एक बार काइंडली डॉक्टर राजवीर सिंह, क्या जा सकते हैं बात? एक बार बाहर वालों को बुला लो, बाकी अंदर वालों ने सबने सुन लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई उठकर नहीं जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। डॉक्टर रविशंकर, आप मोदीपुरम के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और बहुत सी भारत सरकार की कमेटीज़ के आप सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, 1 घंटा हमारा सेशन लेट चल रहा है, कृपया इसको शॉर्ट। श्योर। थैंक यू, थैंक यू। Respected and Honorable Union Minister of State for Agriculture, Sri Kailash Chaudhary ji. Okay, sir. So good morning to all of you. I am from Indian Institute of Farming System Research, and we are working on 4 major research themes: integrated farming system, cropping systems, organic agriculture system, and also recently we are also conducting the multi-location trials on the natural farming. All these practices promotes the sustainable agriculture. Next slide. Next slide. Indian agriculture has to achieve the food and nutritional security for the 17.5% of the world population with only 2.4% of the world land. And we also need to look into this, that there are 239 districts which consume a less quantity of the fertilizers and pesticides. So those are all the areas where we can promote these natural farming, organic agriculture systems in order to further enhance the productivity. Next. Sir, to achieve the sustainable livelihood, the 4 things are very, very important. One is constant increase in income, reducing the expenditure,
then increasing the self-employment, reducing the risk, that is both the market-related risk and also the climate-related risks, and this can be measured through the three angles, ecological, economic and social equity. So the natural farming can if it is promoted through the integrated farming approach, farming systems approach, this can ensure the sustainability. And we have to look into the where from it originated. The relay cropping systems, which were practiced in Indian tradition also, that was the origin of the natural farming, sir. And also all the crop residues which are available, which are recycled back to the land for improving the soil fertility. So that is the origin of the natural farming. Next. And in Indian context, we have added several angles into the natural farming, apart from the application of the concoctions, because the pest and disease management is the major issue both under organic as well as the natural system. Here we have to go for a prophylactic application, that is prevention is better than the cure. So we have to apply all these plant-based extractions before occurrence of the insect and diseases. This is one of the important thing. The another important point is that we go for green manuring during the fallow period, but in the natural farming we need to go for a multivariate cropping or the pre-monsoon dry seeding based on the experience of the Andhra Pradesh community-based managed natural farming and also our own experience. This is helping for the improving in the soil health. Next. Then, sir, with as per the guidance of our Honorable DG and also our DDG NRM, Dr. S.K. Chaudhary, sir, we have formulated the experiments, multi-location experiment, by taking the feedback from the Niti Aayog, all the stakeholders, sir, from Vijay Kumar, all the Rajeshwar Chandelji. So we started this experiment during the last 2 years, and we have a next. And sir, this multivariate cropping is found to be the one of the best practice during the, which can be practiced during the fallow period, wherein the seeds of green manure, cereal, pulses, oil seeds are to be mixed and then grown in the field, so that it can give the multiple effect like reducing the underground allelopathic effect can be done, and also the biomass production, sufficient biomass production with varying level of CN ratio can be achieved. Next. And sir, we have analyzed these concoctions, Bijamir, Jivamir, and we found that there are a lot of free living nitrogen fixers, phosphorus solubilizing bacteria, and also the potassium solubilizers. This helps to improve the soil nutrient availability in the soil during the course of natural farming interventions. Next. Sir, what we studied during the initial year, the 4 pillars of the natural farming, the concoctions contribute about 7 to 25% in different cropping system. Mulching and intercropping contributes 11 to almost 67%. So among all the practices of natural farming, intercropping and mulching, which are proven agronomic practices, play a very, very important role in enhancing the productivity of the crop. So I request all the KVKs, while implementing the natural farming, please ensure that this intercropping and mulching are done in the natural farming systems. Next. So during the initial phase of transition from the conventional to the natural farming, sir, we feel that there is a deficiency in the nitrogen supply from the systems. So in the initial, during the transition stage, apart from these natural farming pillars or the practices, we also need to add some of the organic manures as a supplements to meet the nutrient demand during the, especially during the transition phase. Next. So there are several sustainable agriculture practices and systems are in India, sir, which are documented already. It is there in the slide. So which can be promoted as alternative strategies for achieving the sustainable agriculture. During 2016, the Sikkim state was declared as the organic state, and after that, due to the implementation of organic farming, the diversification to the high value crops happened naturally. So similarly, the organic or natural farming promotion in the identified niche areas can improve the diversification of the crops in various districts. Next. So this is the way forward. This is the last slide. So the sustainability can be achieved or enhanced by promoting through the integrated farming systems. The natural farming can be achieved sustainability through the IFS approach, and all the practices of natural farming need to be practiced, and especially the timing of operation in natural farming is very, very important, sir. Even including the timing of mulching is very, very important, very critical in the natural farming in order to reduce the weeds and also in order to conserve the soil moisture. So the time of operation should be given very important in the while promoting the natural farming, and the building up of the soil fertility, and also the during the initial stage of this natural farming, we need to apply the
organic manures also to supplement to the yield. So area, crop and resource specific approaches needs to be applied for the promoting the natural farming, sir. Thank you very much. Thank you Dr. Ravi Shankar for honoring the time limit. Thank you so much. क्वेरी किसी का शॉर्ट क्वेरी, सो हम डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर रविशंकर से. थैंक यू वेरी मच. सो नेक्स्ट स्पीकर वुड बी शेटिया रतिलाल जी. शेटिया रतिलाल जी, आपने ये पिछली प्रेजेंटेशन भी सुनी. आप किसान हैं, 100 एकड़ पे काम कर रहे हैं, कच्छ एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है. तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और प्राकृतिक खेती का फ़र्क क्या है, ये मुझे लगता है कि आप और इसको क्लियर कर पाएंगे. और बाकी जो अगले हमारे स्पीकर हैं, संजय कुमार मंडी से किसान हैं. संजय, आप अगर सीधा बोलेंगे तो ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी तो इसको अपलोड जल्दी कर दें. ये रतिलाल जी, वैसे तो कल पूरा विषय रख दिया था भाई साहब.